Hello students, good morning. I am Shivram Visay, lecturer in mathematics of Nalanda Vidya Mandir Plus 2 Science College, Barampur. Last class we have to study examples of PMR. Now, today starting exercise 5. First we have to read question. Prove the following by induction. That means induction means कौन ना हमको देची PMI principle of mathematical induction द्वारा हमको सेम प्रूफ करे बोला तो हमको इंडक्शन मेथड कहथिबो और PMI कहथिबो है नहीं त कौन अछि दैट मींस सेम कौन अछि गोटे PMI कहबा जहा ओनली इंडक्शन मेथड कहबा सेम तो कौन क्वेश्चन देला कौन 1 + 2 + 3 + up to n अछि इक्वल n * n + 1 डिवाइड बाय 2 अछि तो 2 थले देखो आगो के सब लेजिबा लेट p of n हिजिबो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट से लगाते n हैला गेला n into n plus 1 divided by ये 2 हैला ये हमरो स्टेटमेंट ना स्टेटमेंट दा कौन अछि स्टेप 1 करिया तो स्टेप 1 कौन अछि ना लोएस्ट वैल्यू किछ हम देनी दैट मींस नेचुरल नंबर देछि हमको तो लेट नेचुरल नंबर लोएस्ट वैल्यू 1 देन कौन अछि भाई LHS नियो तो LHS से लगाते 1 नेले फर्स्ट टर्म एडी केते अछि 1 अछि राइट हैंड साइड की अछि n into n plus 1 divided by 2 1 into 1 plus 1 divided by 2 so 1 into 2 divided by 2 to cancel ये हमारा 1 therefore left hand side equal to हमारा right hand side so p of 1 is true है ना जब p of 1 true है next इवा step 2 तो step 2 कौन सी assume that p of m is true for n equal to m n equal to m पकेबा कौन सी ना p of m ट्रू होची कुनेबा जदी p of m ट्रू होची दैट मींस अबे देखो एंजर इनपुट करो p of m इक्वल से 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट से कहते m इक्वल है कहते ठीक m into m plus 1 divided by 2 ये है इक्वेशन नंबर 1 नाउ इज स्टेप 3 का काम करो we have to show that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1 now देखो बस रेडी करते that is n बदले m plus 1 पकेबा the p of m plus 1 1 plus 2 plus 3 plus m plus 1 equal to कितने थी n बदले कौन सी m plus 1 पुट करो ये रहेगा थी m plus 1 whole divided by 2 देखो आप तो शॉर्टकट लिख ले कौन लिख पाएगा implies p of m plus 1 equal to 1 plus 2 plus 3 plus ऐसा कहते हैं m plus 1 equal है हमारा ठीक m plus 1 m plus देखो plus 1 plus 1 m plus 2 divided by 2 अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड टू करबा तो नाउ द फर्स्ट नेबा कोन छै बे लेफ्ट हैंड साइड की अछि 1 plus 2 plus 3 डॉट डॉट plus m plus 1 m plus 1 का प्रीवियस टर्म गोटे माइन 1 माइनस हबो तो 1 plus 2 plus 3 plus लार प्रीवियस टर्म की आसीबो m जदी जानि पारनो प्रीवियस टर्म की आसीबो m एडी अछि p of m रो हाईएस्ट लोएस्ट कोन देखो लास्ट वैल्यू का प्रोबेबिलिटी लास्ट वैल्यू plus of p of m plus 1 1 plus 2 plus 3 डबल वैल्यू का चैप्टर में हेलो m into m plus 1 by 2 इक्वल है हमारा m into m plus 1 by 2 ये लगते हैं plus of m plus 1 ये लगते हैं जो 2 m into m plus 1 plus 2 into m plus 1 ये टू मल्टीप्लाई हो ओके ये देखो जब 2 मल्टीप्लाई होची ना बस रेडी के दसला एटी m plus 1 अछि m plus 1 कॉमन नै जाओ त स्लाइड के तसला ये हमरो m रहला एटी हमरो 2 रहला डिवाइड बाय 2 तो ये हमरो RHS हला जदी RHS अछि सो लिखियो सो p of m plus 1 is true hence और कौन 10 p of m is true implies p of m plus 1 is true हम एटा शो करे देखे देले देखियो स्टेप 4 तो स्टेप 4 असला कहते हैं hence
by the PMI. P of n is P of n रा कोन आसला true है जति कतले for all n belongs to natural number n डबल जति natural number होची हमर टा कोची ना prove है जति एटा होची नेक्स्ट बा other question first question prove है second question बा now going to question number 2 दला 1 square plus 2 square plus 3 square plus कितना छी n square इक्वलिटी कितना छी ना n plus 1 into कौन थी n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 यह हमारा कौन सी क्वेश्चन नंबर 2 दिस तो क्वेश्चन नंबर 2 देला रेडी देखो हम हमें प्रूव करबा तो क्वेश्चन नंबर 2 रे से हम कोन लाठी ना स्टेटमेंट देला 1 square plus 2 square plus 3 square अछि अप टू कोठी n square इक्वल r सम ला केता आसीबो n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 same n belongs to natural number है ना किसी दिबे गिवन देन दैट मींस नेचुरल नंबर हम देखि जल्दी देला स्टेटमेंट लिखो लेट p of n 1 square 2 square 3 square plus ये नंबर n square इक्वल लगते n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 है ओके तो डिवाइड बाय 6 से नेक्स्ट देबा स्टेप 1 तो स्टेप 1 कौन छी लेट n इक्वल टू 1 देखो जदी n इक्वल 1 होची कोन होची फर्स्ट रेड आसला p of आसला केते 1 हैला तो p of 1 रेड केता छिटी माने LHS p of 1 मींस कोन LHS इक्वल टू p of 1 इक्वल हैला केते 1 रो स्क्वायर हैला केते 1 नाउ जो राइट हैंड साइड केता छी n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड केता छी 6 अछि तो डिवाइड बाय 6 हेले मतलब n 1 बको 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 डिवाइड बाय 6 तस लगते 1 into 1 plus 1 2 2 into 1 plus 2 plus 1 3 डिवाइड बाय 6 2 1 जा 2 3 जगह 6 हेला हेला मोर 1 हेला तो देयरफॉर का सेटी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हेला मोर right hand side so p of 1 is true हैला तो p of 1 कोन हैला true जब p of 1 true हैला नेक्स्ट कोन स्टेप 2 तो इटी केता हिसबो assume that p of m is true for n equal to m एनो p of m true हैला that is अब देखो n जगह पे काम होकेबा m पुट करबा एडी m पुट करो तो p of m 1 square 2 square 3 square plus एडी केता अछि m square तो m square असला केते m into m plus 1 into 2m of plus 1 divided by 6 आकोन इजबा इक्वेशन नंबर 1 इजबा देखो जदी इक्वेशन नंबर 1 हैला एबे जिबा स्टेप 3 तो स्टेप 3 कोन अछि स्टेप 3 कोन कहथली we have to show that p of m plus 1 is true जदी p of m plus 1 true असला that is अब n जार कोन पकरो n को रिप्लेस करके m plus 1 पकरो m p of m plus 1 1 square plus 2 square plus 3 square plus केना छी n बदले को आसीबो m plus 1 whole square राइट साइड के केता छी m plus 1 into एडी केता आसला n plus 1 तो m plus 1 plus 1 into एडी केता छी 2 into m plus 1 plus 1 divided by 6 अछि ओके अब ठीक एडजस्ट कर लेखो तो देख लेगा आसला p of m plus 1 हैला 1 square 2 square 3 square plus m plus 1 whole square तो एटा अछि केते m plus 1 m plus 1 plus 1 m plus 2 नेक्स्ट असला ना 2 into m 2m plus 2 plus 1 2m plus 3 divided by 6 हैला एबा में LHS equal to RHS शो करबा देखो नाउ LHS equal असला 1 square 2 square 3 square plus m plus 1 whole square है नहीं
ता एबे m plus 1 रो प्रीवियस टर्म देखो 1 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर प्लस ऑफ m रो स्क्वायर प्लस m plus 1 रो होल स्क्वायर ओके तो 1/5 रो स्क्वायर प्लस m रो स्क्वायर कोन अछि इक्वेशन 1 चेक करो कोन अछि m into m plus 1 into 2m plus 1 divided by 6 ओके m into m plus 1 into 2m plus 1 divided by 6 plus 3m plus 1 रो होल स्क्वायर एबे देखो एठी एलसीएम ले जाओ टेकिंग एलसीएम ले कोन आसला एलसीएम वाला 6 तो m into m plus 1 2m plus 1 plus देखो 6 एलसीएम वाले ए 6 का मल्टीप्लाई हो 6 into m plus 1 रो होल स्क्वायर तासे कहते m plus 1 कॉमन ले जाओ तो m plus 1 कॉमन वाले एरा कहते m into 2m plus 1 m into 2m plus 1 plus 6 into m plus 1 whole divided by 6 है ना whole divided by 6 से देखो इथे होला m plus 1 m into 2m square m into 1 plus m 6 into m 6m plus 6 into 1 plus 6 divided by 6 असला तसला कहते m plus 1 into 2m square plus 7m plus 6 divided by 6 तो 6 into 2 मल्टीप्लाई के असला कहते 6 into 2 असला मतलब 12 असला मोर अछि कहते 7 तो मल्टीप्लाई करबे 7 टा हमें 7 m टा को हमें ए टाइप एडजस्ट करिया जहा कि एडिशन को दीटा नंबर 2 नंबर एडिशन करिया एडजस्ट करिया तो एडिशन और सबट्रैक्शन करिया एडजस्ट को होछि सबट्रैक्शन कला 7m आस्तर अछि मल्टीप्लाई कला रे m स्क्वायर कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट दिला मल्टीप्लाई कला जा अछि 12 असला तो 12 रा में कोन अछि 4 3 एलसीएम 4 3 12 असला तो 4 plus 3 7m 4 into 3 12 ओके नाउ जिया देखो तो असला इम्प्लाइज कसला एलएचएस इक्वल है हमरो m plus 1 into प्लस लगते थी ना 2m square plus 4m plus 3m plus 6 डिवाइड बाय 6 अछि एमे कोन करली 7m ता को एडजस्ट कर ली 4m plus 3m 7m रे करली एबे देखो फास्ट दिटा टर्म रे कोन कॉमन जाउची फास्ट दिटा टर्म रे 2m कॉमन जीवो तस लगते एठी रहला m plus 2 plus 3 देखो क्लास 3 रे 3 कॉमन वाले m 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय एटा करते 6 रे गला तो m plus 1 m plus 2 m plus 2 कॉमन जीवो m plus 2 कॉमन वाले कहते 2m plus 3 divided by 6 तो देखो आरएचएस गति आछि m plus 1 m plus 2 2m plus 3 divided by 6 एबे देखो जदि डिवाइड बाय 6 आछला एबे कोन अछि ये हमरो आरएचएस सो p of m plus 1 is true thus p of m is true implies p of m plus 1 is true है नेक्स्ट बार करेगा स्टेप 4 तो स्टेप 4 कौन होची hence by the PMI p of n is true for n belongs to natural number n belongs to natural number okay मेरा क्वेश्चन नंबर और कत अछि ना 2 सरला नाउ जो क्वेश्चन नंबर 3 पॉज द वीडियो एंड कौन छी वीडियो पॉज कर जल्दी लिख दियो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 3 1 plus r square plus r cube up to r to the power n equal formula से r to the power n plus 1 minus 1 by r minus 1 okay तो ये कौन गला ठीक ना 1 plus r square plus r cube plus up to r to the power n equal to r power n plus 1 minus 1 by r minus 1 इठी एनी कोन n belongs to same natural number जदि n natural number आसला प्रथम काम कोन ना ताको नै जे p of n सॉल्यूशन रे काम करबा ना को नै जे फर्स्ट लेट
कौन करे थी p of n स्टेटमेंट 1 plus r r square r cube आफ्टर लगाते r to the power n ये ला r to the power n plus 1 minus 1 by r minus 1 ना जो स्टेप 1 पुट करो स्टेप 1 रा काम होला let n equal to 1 देन देखो तो ये हमरो LHS की अछि p of 1 तो p of 1 रे देखो एबे r रा पावर 1 पकेबी तो r एने कौन छी n रा वैल्यू कत 1 पकेले r रा पावर 1 दैट मींस r हेले r माने कौन छै 1 plus r जदि मैं n equal 1 पकेबी तो कौन आसो फर्स्ट टर्म रे की हबो 1 plus r हबो तस लगे देठी न लगते 1 plus r है नहीं ये ला मोर कते r equal 1 पकेले 1 plus r जदि 1 plus r हैला नेक्स्ट कौन छी राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड की अछि r to the power n plus 1 minus 1 by r minus 1 r power 1 plus 1 minus 1 by r minus 1 r square minus 1 square divided by r minus 1 तो a square minus b square फॉर्मूला a square minus b square फॉर्मूला कौन अछि a minus b into a plus b ओके सेटा फॉर्मूला लिख लो a square minus b square तो r minus 1 r of plus 1 divided by r minus 1 r minus 1 cancel तो लगते r plus 1 तो 1 plus r plus 1 equal so therefore LHS equal to RHS so p of 1 is true तो p of 1 true is left next you are step 2 assume that p of m is true हम assume नहीं जीवा मन करने बा कौन सी p of m रा true नेला for n equal कितना ची m n equal to m that is p of m put करो तो हम जा देखो तो 1 plus r square up to r to the power m equal असो किते r power m plus 1 minus 1 by r minus 1 ओके ताको नै जीवा इक्वेशन नंबर 1 येला मोर इक्वेशन नंबर 1 ना जीवा स्टेप नंबर 2 हैला स्टेप नंबर 3 जाओ स्टेप 3 तर स्टेप 3 कोन अछि we have to show that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1 हम काम प्रूव करेगा n equal है कम पकेबा m plus 1 पकेबा that is देखो आंसला p of m plus 1 तो p of m plus 1 1 plus r square 1 plus r square plus है कितनी r to the power n तो r to the power m plus 1 equal to नेक्स्ट कौन सी n जाएगा m plus 1 होगा तो r power m plus 1 minus 1 divided by r minus 1 है ना ये देखो कौन सी आपकी सदे लिख दिया उठी 1 plus r square plus r to the power m plus 1 equal to r m plus 1 m plus 2 minus 1 divided by r minus 1 है ना ये देखो प्रूव करना ना प्रूव करो LHS 1 plus r square r to the power m plus 1 एबे r power m plus 1 अछि तार प्रीवियस टर्म के हो r to the power m हम कम कहली p of m डाल तो नेक्स्ट के अछि टी ना 1 plus r square plus r to the power m plus r to the power m plus 1 रहला तो m plus 1 रहला देखो कोन अछि तो 1 plus r square plus r to the power m वैल्यू r to the power m plus 1 minus 1 by r minus 1 पुट करो r to the power m plus 1 minus 1 by r minus 1 और की अछि plus r to the power m plus 1 taking LCM तो LCM के जीवो r minus 1 एडी अछि केते r to the power m plus 1 minus 1 plus r to the power m plus 1 into एडी के r minus 1 मल्टीप्लाई हो r minus 1 मल्टीप्लाई तब r to the power m plus 1 मल्टीप्लाई करो r to the power m plus 1 minus 1 plus r into r to the power m plus 1 into r minus r to the power m plus 1 divided by r minus 1 r to the power m plus 1 plus
माइनस कैंसिल देखो तो कैंसिल ହେଲା ସ୍ଲାଇड के दसना नाइट के अछि -1 अछि तो -1 8 टू द पावर कोन अछि m + 1 प्लस m + 1 प्लस 1 इज पावर पावर एडी कोन अछि r पावर किछना माने 1 अछि तो मोर दिले जरा पावर कोन अछि एडिशन हिजो एडिशन डिवाइड बाय केता सेठी r - 1 तो सजे लिखि दियो तो 8 टू द पावर m + 1 + 1 m + 2 -1 by r - 1 देखो एटा मोर का आसला RHS आसला तो ये हमरो RHS है जदी RHS आसला तो सब रेडी p of m + 1 2 हैला तो लिखियो कोन होची so p of m + 1 is true thus p of m is true implies p of m + 1 is true okay now jiba step 4 तो step 4 का आसीबो we have to show that p of sorry hence by the PMI p of n is true है कौन आसीबो for कारण for all n belongs to natural number okay ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ना जिबा क्वेश्चन नंबर 4 बिट क्वेश्चन नंबर 4 बिट कौन देखला क्वेश्चन नंबर 4 बिट देला 5 to the power n minus 1 is divisible by 4 हम कोन कहै छी डिविजन बाय 4 कहला देखो जदि डिविजन बाय 4 कहै छी तबे कोन आसीबो आपु लेबा सेम क्वेश्चन रे n कोन n किसी गिवन देने में हम कोन कहली नेचुरल नंबर जदि n नेचुरल नंबर होची तो प्रथम स्टेटमेंट नै जाओ लेट p of n 5 to the power n minus 1 is divisible by 4 next is step 1 तो step 1 कोन अछि let n equal to 1 then मतलब 1 पकाओ तो p of 1 5 power 1 minus 1 तो 5 minus 1 4 तो 4 टा मोर 4 तो डिविजन हो परिबो तो 4 by 4 equal नंबर 1 तो which is divisible by 4 यदि 4 द्वारा डिविजिबल हैला जैसे का सो p of 1 is true p of 1 का आसला ट्रू हैला यदि p of 1 ट्रू होची नेक्स्ट बा स्टेप 2 assume that p of m is true for n equal to m that is p of m एबे n जार m पकाओ तो p of आसला रठी p of m 5 to the power m minus 1 is divisible by 4 जब divisible by 4 होची हम कोन ट्रू बोली नेले ऑलरेडी divisible होची जब divisible ऑलरेडी होची तो 5 to the power m minus 1 equal to 4 lambda येला मुसे धरिनियो 5 to the power m minus 1 equal to 4 lambda आसला जब 4 lambda रेंज का आसला 4 द्वारा divisible होची तो ये कौन सी फिर lambda कोन lambda belongs to natural number lambda नंबर natural number कहला एबे 1 द्वारा ऐसे नहीं जाओ तो 5 to the power m हेला 4 lambda plus 1 ताको ने जीबी इक्वेशन नंबर 1 नेक्स्ट बा स्टेप कितना 3 we have to prove that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1 that is next कांसला n jar m plus 1 को तो p of m plus 1 5 to the power m plus 1 minus 1 is divisible by 4 is divisible by ऐसा कहते हैं 4 divisible by बसला 4 है जब divisible by 4 होची देखो आको दरिया में काम छटी प्रूव करला
now p of m plus 1 5 to the power कौन छी देखो मोर कौन छी हम प्रूव करला तो प्रूव करले हम कहती फर्स्ट कौन करिया कि 5 to the power m plus 1 अछि तो p of m plus 1 दियो इसलिए कहते 5 to the power m plus 1 minus 1 अछि देखो हमको दरकार कौन छी 5 to the power m दरकार बट एटी अछि कौन 5 to the power m plus 1 ताको कन्वर्ट कर 5 to the power m into 5 to the power 1 minus 1 कोन पे अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़छथि जदि a ର पावर m plus n अछि त a to the power m into a to the power n अलग करि परिबा त सेति अछि 5 ର पावर m plus 1 तो 5 to the power m into 5 ର पावर 1 minus 1 तो 5 to the power m ର वैल्यू 4 lambda plus 1 4 lambda plus 1 into 5 to the power 1 5 minus 1 into पूरा चला by equation 1 ये 5 का कितना मल्टीप्लाई करो तो 4 lambda into 5 plus 5 into 1 5 minus 1 तो 4 lambda into 5 plus 5 minus 1 4 देखो मत कौन करो 84 4 कॉमन जीवो बोले ना 5 lambda plus 1 तो 4 कॉमन जायछि दैट मींस 4 द्वारा डिविजिबल हबो तो व्हिच इज डिविजिबल बाय which is divisible by 4 that is divisible by 4 asla so p of m plus 1 is true जदि p of m plus 1 true हैला नेक्स्ट काठी हम देखिबा 10 p of m is true implies p of m plus 1 is true है जदि p of m plus 1 true हैला एबे कौन स्टडी स्टेप 4 तो स्टेप 4 देखो hence by the PMI p of n is true for all n belongs to natural number okay ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे now जो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 उठला 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 to the power n minus 1 is divisible by 25 for any natural number n greater than equal to that means का आसीबो n ର value 1 है परिबो और n ର value 1 टू बड़ नहीं परिबो तमे n ର value 1 लाबो 20% 2 ने भी हबा है नै तो कौन अछि एठी हम कोन कहै छी ए टोटल क्वेश्चन नंबर कोन कहला n द्वारा कोन छै मोर 25 द्वारा डिविजन होछि हम चेक करिया तो प्रथम देखो जदि 25 द्वारा डिविजन होछि सॉल्यूशन चेक करो लेट प्रथम जहां तक दिस तक स्टेटमेंट ने जाओ p of n तो 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 into 3 to the power n minus 1 is divisible by 25 जब divisible by 25 आसला एबे देखो स्टेप 1 लेट ने जो n equal to 1 जदि n equal 1 हला एबे कोन अछि p of 1 7 रो पावर 2 into 1 plus 2 रो पावर 3 into 1 minus 3 3 रो पावर 1 minus 1 तास लगते 7 रो पावर 2 plus 2 रो पावर 3 minus 3 into 3 रो पावर 0 तो 3 minus 3 0 हैला ये 1 कैंसिल तो 49 यस लगते plus 2 रो पावर 3 minus 3 0 हैला 1 into 1 तो 49 plus 1 यस लगते 50 तो 50 is divisible by 25 50 divided by 25 25 हो जाए आंसर divisible होची तो which is divisible by 25 now so p of 1 is true अब देखिबा step 2 कौन छी assume that p of m is true for n equal to m that is एबे कौन छी n जरा m पको
तो p of m 7 to the power 2m plus 2 to the power 3m minus 3 into 3 to the power m minus 1 is divisible by 25 मोर कौन सा डिविजिबल आंसर कहते हैं 25 जब डिविजिबल बाय 25 आछि एबे देखो हमको कौन लिख परिबा और हम लिख परिबा को 7 to the power 2m plus 2 to the power 3m minus 3 3 to the power m minus 1 equal to 25 lambda से where lambda belongs to next one number देखो एबे का आसला 7 to the 2m मु 25 lambda बोल काई डिविजिबल 25 होची तो 25 lambda बोला एबे 7 to the 2m डबा लिखो implies 7 to the power 2m equal to 25 lambda minus beta total ना धर राइट साइड तो 2 to the power 3m minus 3 into 3 to the power m minus 1 है ना ये नेक्स्ट कौन सा आपने गली इक्वेशन नंबर 1 नाउ जा स्टेप 3 देखो स्टेप 3 में आसीबो we have to show that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1 okay that is हम कौन लिख परिबा n जर m plus 1 होगा तो p of m plus 1 7 to the power 2 into m plus 1 plus 2 to the power 3 into m plus 1 minus 3 3 to the power m plus 1 minus 1 is divisible by 25 देखो ये कौन सा डिविजिबल बाय 25 कोछि काम से कहछि 25 का डिविजिबल कहछि जब 25 डिविजिबल हैला हम शो करिया नाउ ले जीवा p of m plus 1 7 to the power 2 into m plus 1 plus 2 to the power 3 into m plus 1 minus 3 into 3 to the power m plus 1 of minus 1 ओके एबे देखो हम कोन करो मते दरकार 7 रो पावर पहुंची 2m दरकार तो बे 2 m टा मल्टीप्लाई कर दियो m plus 1 सहित तो 7 रो पावर 2m plus 2 into 1 2 plus 2 रो पावर 3m मल्टीप्लाई करो तो 3m plus 3 into 1 plus 3 minus 3 into 3 रो पावर m plus 1 minus 1 देखो plus 3 minus 3 plus 1 minus 1 कैंसिल हो गया तो आपको सेपरेट कर दियो 7 रो पावर 2m into 7 रो स्क्वायर plus 2 रो पावर 3m into 3 रो पावर m हे गला ओके एबे 7 to the 2m रो वैल्यू बाहर बोले ये वैल्यू पुट करो तो बाहर करके दसला 25 lambda minus 2 रो पावर 3m minus 3 3 रो पावर m minus 1 है ना यहां से कहते हैं प्लस ये कितना छी 2 to the power 3m 3 रो पावर m है एबे देखो एडी के 7 रो स्क्वायर टा अछि 49 प्लस 7 रो स्क्वायर 49 प्लस 2 to the power 3m into 3 power m 49 रा भीतर मल्टीप्लाई करो 25 lambda into 49 minus 2 रो पावर 3m minus 3 3 रो पावर m minus 1 into 49 plus 2 रो पावर 3m into 3 रो पावर m ओके ए देखो ए 2 रो पावर 3m 3 रो पावर 3m मतलब कौन 3 रो पावर m अछि तो आपको मते 2 रो पावर 3m 3 रो पावर m रे कन्वर्ट करी तो कन्वर्ट करले कितना आसला 25 lambda into 49 minus आपको लिख परिबा 2 रो पावर 3m into 2 रो पावर minus 3 into 3 रो पावर आगु पहुंची m into 3 रो पावर minus 1 into असला कहते 49 plus 2 रो पावर 3m 3 रो पावर m है 2 रो पावर minus 3 को लिख परी 1/2 to the cube लिख परी देखो डार्क शॉर्टकट लिख परी 2 रो पावर -3 को 1/2 to the power cube तो 1/2 to the power 1/8 नेक्स्ट 3 रो पावर -1 3 रो पावर -1 मींस कैंसिल 1/3 ओके ए दिरा को मैठी शॉर्टकट रे यूज कर तो शॉर्टकट यूज करले माने से देखो 25 lambda into 49 minus 2 रो पावर 3m into 1/8 ओके नेक्स्ट अछि प्लस into 3 रो पावर m into 1/3 into 49
प्लस 2 ର ପାୱାର 3m into 3 ର ପାୱାର m। ଏବେ ଦେଖ 2 to the power 3m 3 ର ପାୱାର m 2 to the 3m 3 ର ପାୱାର m ଏ ଦିନ ଆମର कॉमन ଅଛି। ତ कॉमन ନେଲେ कोन आसिला देखो एठी कोन आसी कॉमन नेले कॉमन नेले आसिला हमर एठी implies p of m plus 1 एगला 25 lambda into 49 minus 2 to the power हम कम एठी माइनस कम बोली ना 2 to the power 3m into 3 ର power m कॉमन है मो 2 ର power 3m 3 ର power m कॉमन है तो माइनस है 1/8 into 1/3 1/8 into 1/3 माइनस एटा माइनस टा गला प्लस टा माइनस है आ गोटे की अछि 49 भी अछि into 49 अछि माइनस 2 ର power 3m 3 ର power m पला प्लस 1 माने माइनस 1 आइबो माइनस पड़े छी तस कहते 25 लैम्डा into 49 minus 2 to the power 3m 3 to the power m तो इसे हम गला कहते 8 into 3 तस कहते 49 8 into 3 तस कहते ये नंबर 8 into 3 तस कहते 25m lambda 49 minus 2 to the power 3m 3 to the power m divided 49 minus 24 divided 2 8 टा को 2 to the power क्यों लिख पारिया 3 टा को मैं कौन 3 लिखली एटा बे 2 to the power 3 और 3 to the power 3 टा को ऊपर नहीं जाते 25 lambda 49 minus 2 to the power 3m 3 to the power m 2 to the power minus 3 3 to the power minus 1 अगेन जो थे कन्वर्ट करथि आप सब से उल्टा कन्वर्ट कर देखो सबट्रैक्शन कते छला 9 to 4 गले 5 4 to 2 गले नेक्स्ट का जगते 25 तापर देखो 25 एटा हम सजे लिख दियो 25 lambda into 49 2 to the power 3m into कौन से minus 3 3 to the power m minus 1 into 25 कॉमन है जो 25 कॉमन वाले 49 lambda minus 2 to the power 3m minus 3 3 to the power m minus 1 तुम्हारा ठीक आसला तो डिविजन बाय 25 और कॉमन जाइस माने 25 द्वारा डिविजन हो तो एटा मध्ये कोन आसीबो नेचुरल नंबर काहे कि लैम्डा ଗୋଟେ नेचुरल नंबर m नेचुरल नंबर तस कहते हैं 49 minus into lambda minus 2 to the power 3m minus 3 to the power m minus 1 belongs to natural number. So which is divisible by 25. So p of m plus 1 is true. That's the p of m plus 1 plus that. Thus p of m is true. Implies p of m plus 1 is true. Next देखिए कौन सी step 4. Hence by the PMI p of n is true for n belongs to natural number. Okay तो ये कैसे कौन सी प्रूव है PMI द्वारा हम कौन कले ता क्वेश्चन नंबर 5 साला नाउ देखिए नेक्स्ट क्लास रे अदर प्रॉब्लम करबा आज पे एतिकी ओके बाय।